Today is your 17th lecture of social security, social issues, internal security and ethics, right? Today we are going to discuss a couple of interesting things. So your first topic is PM Vidya. We are going to discuss a couple of things about PM Vidya. It was launched during pandemic, right? And it has achieved commendable recognition worldwide. We are going to discuss that. Then FINA is your international body that regulates swimming competitions. Even Olympics may, it is the body that oversees every rules and regulation that are pertaining to your elite competitions when it comes to swimming. So they have made a certain changes regarding a particular category. So this topics revolves around both ethics of sports and LGBTQ. It's a very rare topic, बहुत कम आता है where two major topics overlap. So this can be quoted as an example in your mains exam, right? So ये बहुत अच्छे से देखना. Then there is Operation Sankalp. It is the third year. We are commemorating the third year of Operation Sankalp. Why it was inducted in the first place and what are the stakeholders, where it is applicable. We are going to discuss everything, right? If you guys have any doubts, you can mention them in comments. I'll take them up one by one, right? Good afternoon, Meera. Very good afternoon. So इससे पहले we go ahead with our topics. We have started this new initiative because prelims हो चुका है, prelims का result आ चुका है. Now we are on to our mains. So we are going to daily give you a question. जैसे आज हम internal security social issues discuss कर रहे हैं. So related to that, I'm going to give you a question. Every teacher will give you a question daily regarding to the same, right? You can hear the question, write an answer. You can either type the answer or you can write it on your pen and paper and post a copy of it on our website, right? From there, the team of experts will evaluate it and give you the feedback, which is going to be entirely free of cost, right? So इसमें एक नया innovation है. We just want to provide you the best help we can for cracking this UPSC, right? Good afternoon, Rohit. Good afternoon, Nisar. Okay, so today आज का topic. So this seize the mains. We want you to actually seize the mains. So आज का question आपके लिए है, what are the challenges associated with the school education in India, right? So आप 250 words में इसका answer लिखेंगे and you can either type the answer, right? और आप copy pen पे लिख लीजिए, then you can click a picture and post it on our website. वहाँ पे आपको portal मिल जाएगा, right? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन इवन गेट इट फ्रॉम देयर. आप आंसर लिख के वहाँ पोस्ट करिए एंड द एक्सपर्ट्स जो भी हैं हमारे द टीम में, वो उसको इवेल्युएट करके आपको फीडबैक देंगे एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट अ लॉट, राइट? सो दिस इज द टॉपिक. आई टेल यू ब्रीफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर अबाउट क्या क्या लिखना है, बट ओवरऑल फॉर्मल आंसर यू विल हैव टू राइट. ओके, सो बेसिकली स्टार्टिंग विद how social issues start, the integral part. आपका जो sustainable development goals हैं, उसमें goal number 4, the pillar number 4 is quality education and education for all. ठीक है? So the whole theme revolves around your SDGs. SDGs की limit क्या है? We have to achieve them by 2030, right? So ये एक basic है. Now getting ahead, if we see how policy has evolved, education system in India ki, how the policy has evolved. So the national policy on education that was basically framed in 1986, फिर उसमें changes हुए in 1992, and now in 2020 we have come up with a entirely new education policy pertaining to Kasturi Rangan report. Remember, Kasturi Rangan report एक environment के लिए है and एक education के लिए है, ठीक है? जिसका कोई नहीं होता उसका कस्तूरी रंगन होता है. प्लीज रिमेंबर दिस. देयर आर टू प्रोमिनेंट पैनल्स जो रहे हैं. वन इज रंगराजन, सी रंगराजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड वन इज कस्तूरी रंगन. तो इन दोनों ने काफी सारी रिपोर्ट्स दी हैं एंड बहुत सारा ओवरलैप है. प्लीज डू कीप इन माइंड, राइट? नाउ आगे बढ़ते हैं. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी education policy 2020, right? And there are certain, it will induce certain changes in your education system from school to the college level. So your question is pertaining to school level only, but I am just giving you a holistic view of the topic. Answer उसके हिसाब से लिखना है जो पूछा है, right? So it aims at making India a global knowledge superpower. Basically we want
people from abroad to actually come study in India. A lot of them already do, but we want to actually cash in this whole knowledge wala scenario jo hai wo, right? Now cabinet has also approved the change of name of Ministry of Human Resource and Development to Education Ministry. ठीक है, these were the two major changes that were made. Again, what are the problems that are associated with the education system in India? See, education system in India was changed from the time of Lord Macaulay. ठीक है, सो ब्रिटिश इम्पैक्ट देंगे, एंशियंट इम्पैक्ट दे सकते हो, ब्रिटिश इम्पैक्ट दे सकते हो. मैकले के टाइम से जो इंड्यूस था, वी हैव बीन फॉलोइंग दैट. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इफ यू सी, सो अगर हम कस्तूरी रंगन कमेटी की बात करें अगेन, सो इन एडिशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस, एजुकेशन का एक्सेस प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली इन द रिमोट एरियाज. देयर आर होल नंबर ऑफ रीजंस. बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट गर्ल चाइल्ड, ठीक है, द फीमेल्स, द menstruation has been a big problem, then availability of toilets has been a big problem, patriarchy has been a big problem. There are a n number of issues associated with it, but as per Kasturi Rangan committee, the quality related deficiency has been one of the chief programs why childhood learning programs have failed, and the examples are curriculums that does not meet development needs of children, lack of qualified and trained teachers, and substandard pedagogy. Pedagogy as in टीचर पढ़ा रहा है, आपको टीचर की बात समझ नहीं आ रही है, यू आर सिटिंग देयर बिकॉज ऑफ द फेयर. ठीक है, वो मार कुटाई वाला सिस्टम है. दैट इज कॉल्ड चाइल्ड टीचर पेडागॉगी, इवन पेरेंटल पेडागॉगी. तो द लेवल ऑफ comfort between a teacher and a child, right? You actually are getting it, what they are teaching, that has to matter. So these were the issues that were highlighted by your Kasturi Rangan report. Now currently if you see, Right to Education Act, Right to Education Act is the basic act that provides free education to everyone, that gives the right to free education, elementary education to everyone all over India, right? Now this has been particularly decided from 6 to 14 years, right? Now committee noted that current education system solely focuses on learning of facts and procedures, not the actual development of cognitive abilities of children, right? So basic parameter jo abhi hum follow kar rahe hain, that is of rattafication. So that has been something that revolves around the core problem of education system. Now there is a report by Acer, theek hai, annual status of education report which comes almost every alternate year. 2016 की report ये कहती है children in class 5th who can read a class 2nd level textbook declined to 47.8%. बेसिकली ये डेटा है. what it says is, बेसिक कहने का मतलब ये है, children who are in the higher grades, they are not even able to comprehend what is written in the textbooks of lower grades. ठीक है, 5वीं क्लास के बच्चे को 2nd क्लास के बच्चे की किताब में क्या लिखा है इसका कोई आइडिया नहीं है. So these are some of the basic problems. Let's go ahead. Now features, what are the features of your new National Education Policy 2020? So National Education Policy submitted by Kasturi Rangan Committee. See, बहुत important है, इन्होंने problems बताई, then इन्होंने इसका solution बताया. They said education policy seeks to address the following challenges of the education system. The new one, quality, we are going to address quality, then we are going to address affordability. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही we are going to provide them very quality education, अच्छी education provide करेंगे of a good means. There was this proper movie called Hindi Medium which revolved around it. The key actor was late Irfan Khan. Very beautiful movie if any of you have seen it. Then equity, we are going to provide equality. Equality तो constitution में prescribed है. We are going to provide them with equity. Then we are going to provide with them access and accountability. Accountability how? अगर हम आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं, आपका बच्चा यहाँ आके इतनी देर पढ़ रहा है, so what are we actually teaching them? So it will give them accountability on the part of school, on the part of teachers, right? So this is all what new education policy is going to provide. Now there are a couple of initiatives that have been taken by the government of India pertaining to education. So there is Samagra Shiksha, जिसमें आता है आपका सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है, there was this beautiful song framed by A.R. Rahman, School Chale Hum. So this has been going on since early 90s, right? Then there is Swayam.
this is self certification of quality of education. Then there is district amplification. You can see what the full forms are when you write the answers. I'm just telling you brief points what you can write in the answers. Then Ministry of Human Resource Development, they have launched a 70-point performance index to assess areas of deficiency in schools performance in each state. ठीक है, तो these are a couple of initiatives. इसके अलावा when it comes to digital training, there have been a couple of ICT initiatives, right? वो क्या है? There is Shala Siddhi to enable all schools to evaluate their performance. Self-regulated है. Then there is E-Pathshala. Everything we are going to provide them in the form of e-learning. So एक तो cost कम हो जाएगी, दूसरा students in remote areas they can study. Owing to the global pandemic, COVID में इसका बहुत benefit मिला है, right? So these are the couple of things that are there. Now Saransh, this was the initiative of CBSE, Central Board of Secondary Education, to conduct a self-review exercise among the students. ठीक है? So these are the couple of answers जो आप इसमें लिख सकते हैं, right? अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे आज के, ठीक है? आंसर्स का आप डिस्कस्ड. नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस पीएम विद्या. पीएम विद्या का ये होल टॉपिक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस. सो योर CIET हैज वॉन यूनेस्को अवार्ड फॉर यूज ऑफ ICT in school education. Your CIET is the Central Institute of Educational Technology. They have won this prize, particularly called UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for use of information and communications technology. Particularly ये किस लाइन में आया है? जो कोविड के टाइम पे, COVID-19 के टाइम पे हमने बच्चों को प्रोवाइड करी है क्वालिटी एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीन्स, ठीक है, डिजिटल क्लासेस के मीडियम से. pertaining to that the award has been awarded. award की जो प्राइज मनी है that is around $25,000. हर साल 2 लोगों को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है. there comes a diploma etc etc. सारी डिटेल्स we are going to discuss आगे, right? So award recognizes basically innovation and approaches, innovation in approaches of method of teaching. Then prize rewards individuals and organization. Basically किसके लिए? Outstanding implementation of outstanding projects and promoting creative use of technologies. International jury select करती है 2 best projects annually, right? Each prize जो है आपका it receives, I told you already, $25,000 का प्राइस मिलता है. And they give you a diploma during a ceremony at UNESCO headquarters in Paris. CIET जो basically है, the body CIET, it is a constituent unit of National Council of Educational Research. NCERT का ये constitutional unit है under Ministry of your Education, right? Department of School Education Literacy, DOSEL, under Ministry of Education. पहले Ministry of Human Resource Development हुआ करता था, इसका नाम चेंज करके हमने Ministry of Education कर दिया है, right? So ये this was all about PM Vidya. Now proactive learning हुई है particular time में to take the education to the doorstep of the children. ठीक है, TV channels के through we have like made it very easy for the children to learn things. ठीक है, छोटे छोटे होते पहले दूरदर्शन पे आते थे, they were used to be really innovative programs, but particularly COVID के time पे this has gone to a very extensive length. These efforts were especially renowned because government has taken it proactively, not just private schools, but government ने इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, right? एक बार PM विद्या देख लेते हैं. So PM विद्या का basic, it was launched as a part of आत्मनिर्भर भारत scheme, and government का इसमें क्या रोल रहा है? They have provide enhanced learning opportunities to 3.7 crore students in higher education, जिसमें ऑनलाइन जो एजुकेशन है that came from top 100 ranking universities, and जो एजुकेशन लेवल है that we have increased from 20 to 40%. 20 से लेके 40% तक का immense development रहा है एजुकेशन में. That's why it has been important, right? आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे. सेकेंड टॉपिक इंटरेस्टिंग है. I'll tell you what it is. So FINA is the body. This is something very interesting. थोड़ा समझने की कोशिश करना. So FINA is the international body which regulates everything pertaining to your swimming. जितने आपके regulations आएंगे, even Olympics में the rules and standards that are set
particularly for swimming, diving, etc., जो water related sports हैं, that are done by FINA. So FINA recently came out with a new regulation that participation of transgenders in women's category, they are going to stop it, and उसके related 2-3 details हैं वो discuss करती हूँ. पहले LGBTQ we have discussed in detail. Who are transgenders? Transgenders are the people who actually undergo surgery or hormonal changes. They take induced hormonal changes. Suppose if they were born with a body of female and they want to be a male, ठीक है, so they take certain medications, they go undergo surgery and they convert into a male person, right? Vice versa, if males they want to convert into female, if they don't feel comfortable in their body, this we have discussed a number of times earlier. ठीक है जी. अब the problem is, आपने अपने आप को बाहर से तो चेंज कर लिया, बाहर से as in you've altered the process, but you were born with something and the certain hormones that are there. See, men they have Adam's apple hair यहाँ पे, there's this certain bulge यहाँ पे, right? So these are the things you can actually not change even when you transition. So the basic difference between the hormones of a man and a woman are testosterone. Men have higher levels of testosterone and women have higher levels of estrogen, right? दोनों में होते हैं. Women have testosterone as well as estrogen, men have testosterone as well as estrogen. लेकिन women में the quantity of the release of estrogen is more, that is the dominant hormone. In men the dominant hormone is testosterone, right? If you're born a male and you want to transition into a female, right, so you will undergo certain medications, surgery होगी आपकी, but what your physiology has given you, what nature has given you, आप उसको कैसे suppress करोगे? So the levels of testosterone, they are said they still remain high in your body, and उसका repercussion क्या आता है? That actually helps you. See, athletics में men और women की category अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि physiologically men are stronger than women. Just physiologically I'm saying, men are stronger than women, that's why they do not compete in the same categories. Wimbledon ले लो आप, tennis का कोई भी ले लो, there are always separate entities, right? Now the thing is, if you're a male and you've converted into a female, can you actually compete in the women's category? Because आपके testosterone levels तो high होंगे, wouldn't it give you an edge? But medically you are a woman, so there is a whole ethical dilemma that has been revolving around it. And FINA basically is an associate body of Indian Olympics Association, लेकिन ओलंपिक्स का और फिना का इस पे बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है, राइट? सो पूरा केस देखते हैं क्या है. छोटा सा आई हैव गिवन यू ब्रीफ. देयर आर सम क्वेश्चंस आई गेस. ओके, नो क्वेश्चंस. गुड आफ्टरनून गणित. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. आई होप यू आर लाइकिंग दिस टॉपिक. दिस इज इंटरेस्टिंग. इवन फॉर मी, आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग. इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल था. इफ यू वांट इन डिटेल यू कैन रीड इट. नाउ लेट्स कम टू डिटेल्स. डिटेल्स क्या है? द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन हैज वोटेड अगेंस्ट अलाउइंग ट्रांसजेंडर्स एथलीट्स. ट्रांसजेंडर्स मैंने क्लियर कर दिया वो ट्रांसजेंडर्स आर टू पार्टिसिपेट इन फीमेल कॉम्पिटिशन. यहाँ पे इन्होंने क्लॉज क्या रख दिया है? दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द ट्रांजिशन बिफोर द एज ऑफ 12. बिफोर द एज ऑफ 12 के पहले ट्रांजिशन का क्या मतलब है? सो ये क्लॉज दिस नीड्स क्लैरिटी. नाउ रूलिंग ओनली अप्लाइज टू एलीट कॉम्पिटिशंस, ठीक है? दिस डज नॉट अप्लाई टू द लोकल कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशंस जो बाहर होते हैं, ठीक है? स्कूल कॉम्पिटिशंस उनमें नहीं. ओनली द एलीट कॉम्पिटिशंस लाइक एशियन गेम्स, योर ओलंपिक्स, इनमें अप्लाई होते हैं. दैट आर एक्चुअली regulated by FINA. ये सब इसमें आते हैं. There is some question, ma'am, is that not a step back in the trans right directions? See, यही ethical dilemma, I will discuss it. It's a very good question. 2021. I don't know what your name is, but it's a very good question. We are going to discuss that. It's sort of, see, I told you, ये वाला topic ना, it overlaps your LGBTQ social issues का and एथिक्स वाला टॉपिक. बहुत कम टॉपिक ऐसे आते हैं. दिस मेक्स दिस केस वेरी यूनिक. हो सकता है आपके पेपर में भी मिल जाए आपको क्वेश्चन, राइट? वैसे भी पर्टेनिंग टू डिस्कशंस, इवन इफ यू हैव एन ओपन डिबेट विद योर पीयर्स, दिस इज समथिंग रियली इनोवेटिव टू टॉक अबाउट. बिकॉज
I'll tell you, there is this transgender woman called Leah Thomas. Leah Thomas की वजह से पूरा केस आया pertaining. They have actually asked for an open category, but उसमें भी कुछ issues हैं. See, your body is regulated by chromosomes. Even when reproduction happens, so women, they have XX chromosomes, men have XY chromosomes, right? So chromosomal test decides whether you are a female or a male. ठीक है? Even when reproduction happens, XY chromosomes, they form the baby boy, and XX chromosomes, if they have come together, they form females, right? इतना I hope basic biology सबने पढ़ी होगी. आपकी करंट अफेयर्स की क्लास डेली बेसिस पे होती है, वीकली. See, I'll come to these questions. We have already spoken about it. If you have something important questions pertaining to topic, please आप अभी लेके आओ. Otherwise, ये वाले questions मैं बाद में आंसर करूंगी in the end of the class. Please बीच में रोको नहीं. If you have something genuine doubt, तो आप please वो put करो. अभी there is a certain flow going on to the class, right? Sorry Ganit, I'll address it later. Now, a working group आया है. Working group is being set up to create an open category. अब open category का क्या मतलब है वो देखते हैं. Working group has been set to create an open category in some FINA competition, and creation of open category will mean that everybody has the opportunity to compete at an elite level. Open category का मतलब होगा there is going to be men's category जो होता ही है. There is going to be a women's category होता ही है. Then there is going to be an open category जिसमें सारे transgenders जो gender roles से अपने आप को identify नहीं करते, whether they are trans women, whether they come, whether they are heterosexuals or not. बहुत सारे LGBT वाले chapter में हमने सारा कुछ discuss किया हुआ है already. I hope you know that. So this has not been done before. So FINA has to lead the way. Now the problem is, अगर FINA इसको आगे कर देता है तो football federation is just behind them. They want to implement it, and without knowing the actual repercussions of it, बहुत सारी world sports regulating bodies इनके पीछे लग सकती हैं just to follow the suit. And the people involved जिनकी actually livelihood depend करती है, who do it for a living, that could get impacted. तो ये एक यहाँ पे problem वाला issue है, right? Now FINA basically क्या बोल रहा है? FINA का argument क्या है ये करने के लिए? FINA says we have always believed that biology trumps gender. Now concept क्या है यहाँ पे? There are two things. One is sex, one is gender. Now अगर आपने थोड़ी बहुत सोशियोलॉजी पढ़ी है तो सेक्स इज योर बायोलॉजिकल टर्म, जेंडर इज अ सोशल टर्म, सोशल नाउन. अगर आप हॉस्पिटल्स में भी फॉर्म भरते हो ना, तो जो नेम और उसके बाद का ऑप्शन होता है, दे डोंट आस्क व्हाट योर जेंडर इज, दे आस्क व्हाट योर सेक्स इज. इट्स मेल, फीमेल और अदर्स, राइट? सो व्हेन यू आर born, you're just born with sex, right? आपको हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बेस्ड ऑन योर जेनिटल्स. आप मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में हो या अदर में हो. लेकिन जेंडर इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज इट इज अ फ्लीटिंग नोशन. थोड़ा बहुत you have to know about gender norms, how things follow. It's a fleeting notion. Many people who are born as men, they do not consider themselves as men, but they relate more to women, hence they go for the surgeries. Similarly is the case with women, right? Many women who are born as women, they associate themselves more with men and hence they go for surgeries. There are certain people who are actually born with both the genitals of male and female. There is a whole different science to it. This is a natural process. No one has actually figured it out how it functions, right? So there are things, but FINA has always said, what FINA's argument is, we have always believed that your biology, it is greater than gender. How you feel doesn't matter. What your body says, how you were born, we will prefer that. तो FINA का statement ये है, and जो भी regulations हैं, we will follow the science. FINA का argument ये है इसमें. This move was widely criticized by gender activists. जो आपका question था 2021, जो आपका question था कि this is not a step back and the transgender rights. We have come to that. So transgenders have actually questioned this कि ये
ग्राउंड्स ऑफ एक्सक्लूजन है आपके. यू आर जस्ट फाइंडिंग द मीन्स टू एक्सक्लूड ट्रांसजेंडर्स. दिस इज सॉर्ट ऑफ harassment and this is something you've been meaning to demean and degrade transgenders. So they have actually brought up this point. Now आगे देखते हैं. बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का कंसेप्ट देखते हैं क्या है. देयर आर सम क्वेश्चंस आई गेस. मैम, वेयर डू इंटरसेक्स पीपल फॉल इन दिस सिचुएशन? सी, इंटरसेक्स पीपल आल्सो दे फॉर्म the part of transgenders because it's a gray area. See, you have to understand, either it's black or it's white or it's gray. जिसका अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, they actually fall in the gray area, right? I hope this is clear. और कोई question है तो you can ask. If I know enough about it, I'll answer it. Otherwise, you can put up the comment. I'll read about it and then I'll answer it in the next class. I hope that's clear. So now what testosterone is, मैंने आपको basics उसके बता दिए हैं, ठीक है? So this is basically a steroid hormone and member of androgen family and it is found in both men and women. Women में levels peak during mid-20s जब you face continuous hair fall, acne, ठीक है, puberty when it's very high, you're raging high on hormones. So mid-20s में it's really high. Now there are two main types of testosterone. There are natural and synthetic. In many cases, to enhance their performances, athletes actually take additional synthetic hormones. तो एक वो बड़ा point of contention रहा है in the past few years कि how can you compete with someone who is going whole natural with someone who is taking additional supplements to enhance their performance. ठीक है, तो performance enhancing agents का जो issue है, that has been there in this realm for a very long time. Now reasons for the changes. Reasons for the changes क्या बोलता है फिना? Transgender athletes in sports, particularly transgender women in women's category, basically they are the heart, they are at the heart of this change. ठीक है, इनकी वजह से आया. there is this lady called Leah Thomas, मैं आगे उसकी पिक्चर दिखाऊंगी. So उनसे related there is the sports scientist called Ross Tucker. उन्होंने एक proper अपना analysis दिया है pertaining to I guess more than 13 case studies. आगे देखते हैं. तो a transgender woman who has gone, ये मैंने आपको पूरा basic बता दिया है. Transgender is something who has undergone the changes. Cisgender is someone who was born with particular genitals and they have kept it as their gender identity as well. ठीक है, तो ये वाला concept मैं आपको already explain कर चुकी हूँ. PDF में एक बार पढ़ लेना please. ठीक है. Now he is Ross Tucker. He is a sports scientist. इन्होंने क्या बोला है? In his words, the effects of testosterone, they result in development of a body post puberty differently for men and women. Post puberty मतलब, puberty का मतलब I hope you know, when you have certain bodily changes. In men you start getting body hair, facial hair, etc etc. Women में it starts with the acid development, right? So Ross Tucker ये बोलते हैं कि both in men and women, when you hit puberty, the hormones they impact your body differently. He said that according to at least 13 case studies, men who later transition to becoming a woman do not have effects of testosterone completely removed. मतलब even if you have changed, somehow changed how your genitalia appear, ठीक है, even if their functions have changed, जो बेसिक फिजियोलॉजी है आपकी, द टेस्टोस्टेरोन्स यू वर बॉर्न विद, उनका इम्पैक्ट नहीं जाता है. दे स्टिल गिव यू एन एज इफ यू आर कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स. आपके पास स्टिल उनका फायदा रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट रॉस टकर हैड सेड. नाउ in a number of physiological systems that are relevant to performance. Physiological system as in जो आपकी bodily strength होती है, which includes your muscle mass, muscle strength, body performance, body fat, heart and lung size. ठीक है, larger the lung size, आप ज़्यादा भाग सकते हो, better perform कर सकते हो. ठीक है, surface area वाला concept आ जाता है. Now testosterone creates things that are never fully undone. ठीक है, वो चीज़ का impact आपके ऊपर हमेशा रहता है. Difference between men and women, जो पार का स्ट्रेंथ है, that can be around 30 to 40%.
इवन आफ्टर पोस्ट द सर्जरी, द पोस्ट मेडिकल ट्रांजिशंस जो आपके हैं, राइट? नाउ टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन फॉर अ ईयर इस चीज को राउंड अबाउट 5 to 10% रिड्यूस जरूर कर देता है, बट इट इज नेवर कंप्लीटली गॉन अवे. सो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है. रिजल्ट है कि द बायोलॉजी इट गिव्स यू एन एज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट रॉस टकर हैज सेड. ही इज अ प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, इसलिए उनकी केस स्टडी ली गई है. नाउ स्टैंस ऑफ योर ओलंपिक एसोसिएशन एंड फिना का क्या है इसमें. Now International Olympic Committee and International Swimming Federation, that is FINA, ये completely opposite चल रहे हैं. Although Olympic Committee FINA की ही regulations follow करता है अपने sports में, but when it comes to the topic of transgenders, ये बिल्कुल opposite उसमें चल रहे हैं. क्या कह रहे हैं? For example, World Athletics कह रहा है, IOC कह रहा है, once transgender woman reduces testosterone for 12 months, 12 महीने के लिए, sorry about this, for 12 months they should be allowed to compete in competition, whereas USA swimming dictates trans athletes must undergo 3 years, 3 साल. एक साल कह रहा है, एक 3 साल कह रहा है. सो पॉइंट ऑफ कंटेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है. क्लियर डिफाइंड जो रोल्स हैं वो नहीं है आपके. ये बेसिक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे. ठीक है, नाउ जो ओलंपिक कमेटी है कह रहे हैं स्पोर्ट्स बॉडीज शुडंट ऑटोमेटिकली अज्यूम कि ट्रांस वुमेन एथलीट्स वर इनहेरेंटली मोर एडवांटेजियस देन सिसजेंडर वुमेन एंड एथलीट्स. जो आपकी ट्रांसजेंडर वुमेन है दे शुडंट हैव टू रिड्यूस देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल. आईओसी ये कह रहा है. फिना क्या कह रहा है? इनकी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कांग्रेस मीटिंग हुई अभी रिसेंटली वेयर दे पुट देयर लीगल काउंसिल, राइट, मेडिकल काउंसिल, हर एक को एक एक के बाद आके बोलने का मौका दिया गया. एंड व्हाट दे सेड, अ कपल ऑफ डेलीगेट्स, व्हाई फिना केम टू दिस डिसीजन, एंड उसके बाद मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस वोटेड फॉर दिस होल डिसीजन एंड उसके बाद दे हैव डिसाइडेड कि इसके बारे में करना क्या है. नाउ लिया थॉमस वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट है? आई विल शो यू द पिक्चर. सो लिया थॉमस actually was a male, she transitioned into a female. ठीक है, she was not comfortable in her body, she transformed into female. Now what happened, she took part in Penn State University. Penn State University is in USA. Penn State University की इनका अलग डिफरेंट कंसेप्ट होता है. आईवी लीग्स का होता है, स्पोर्ट्स के बेसिस पे कोटा मिलता है, इवन जॉब्स दे फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट कोटा होता है पूरा. नाउ स्विमिंग जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था, दिस में दे वर अ पार्ट ऑफ टीम फॉर 3 years. In 2019 she started undergoing hormone replacement and as per जो आईवी लीग के रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग. Now what happened, 2019 में she underwent a transition. In 2022 she actually beat the Tokyo Olympics में जो सेकेंड नंबर पे आई थी एमा वेंट, she actually beat her. तो वहां से ये पूरी डिबेट चालू हुई कि whether she actually had an edge over Emma Went या फिर this whole conundrum of things is just people deciding what to do, what not to do, or whether it is just a measure of exclusion. I would like to know you guys, what do you guys think? Is it fair on the part of transgenders कि उनको exclude करा जा रहा है, or is it okay, is it fair? I just want you guys to have your opinion. Just let me know in comments, a couple of you, why we can't stop these interchange on government level. But why would we want to stop these changes? It is a Mayank, I don't understand your question. Why can't we stop these interchange on government level? I don't understand your question. Can you please clarify, what do you actually want to ask? Are you talking about the change in sex which people want to undergo? Why would we want to stop it? It's a matter of free will, it's their life, what they want to do. Ma'am, it is extremely unfortunate that trans women are being excluded. They are not being excluded. See, that is the thing, they are not being excluded, they are just being excluded from women's category. उनके लिए open category बनाई जा रही है. Listen carefully and पढ़ना इसका PDF. It is unfair from their perspective, but then it's about the interest of a few transgenders against so many women. Okay, fair enough, Ayush. I back you.
आगे देखते हैं इसके repercussions क्या हैं, what are the issues that are related to it. This is going to be really interesting discussion अगर ये one on one हो रहा होता. I really wanted class ना offline होती इसमें, so this would have been really something. चलो आगे देखते हैं. This is Leah Thomas. She was a man, she transformed into a female. ठीक है, she beat जो टोक्यो ओलंपिक्स की सेकेंड कंटेंडर थी उनको. ना यहाँ से पूरी डिबेट आपके आके निकली कॉम्पिटिटिव फेयरनेस की. कॉम्पिटिटिव फेयरनेस क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन लिया थॉमस बॉडी बिफोर शी ट्रांजिशनड इनटू बिकमिंग अ वुमन हैड प्रोवाइडेड हर विद आइडियल सेटअप टू बी एन एलीट एथलीट. ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल में ट्रांसजेंडर्स को एज मिल जाता है, सो व्हेन यू कंपेयर how body functions, see even human races, they are classified into certain men. There are Caucasians, then there is a particular term for black people. I don't want to sound offensive or racist, okay? So if you compare the body stamina of particular afros, ठीक है, that is always more than Caucasians. तो क्या हम बोल सकते हैं वहां पे उनको एज मिल जाता है? There is a whole different parallel debate pertaining to it. That is why I said this is a very important interesting topic. Okay, let's come back to this one. वो white versus black का कभी और discuss करेंगे. Now जो competitive fairness जो ये term आया, this was used by this extraordinary congress that was organized by FINA. ये क्या बोलता है? This was the main reason why transgender women were barred from elite competition unless their transition completed before the age of 12. अब प्रॉब्लम ये है, व्हाट डज इट मीन दैट ट्रांजिशन मस्ट हैव कंप्लीटेड बिफोर द एज ऑफ 12. 12 साल का बच्चा होता है, बच्चे को क्या पता होता है कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू. एंड इन मेनी केसेस यू डोंट इवन हिट प्यूबर्टी व्हेन यू आर 12. In some cases puberty hits you really early, in some cases it hits you really late. So 12 साल का criteria is somewhat shady on many levels. ये एक problem आ रही है. Now this is the thing, the age of 12 is however not scientifically determined, ठीक है. And transition also requires 3 stages. जो आपकी bodily transition होती है 3 stages में होती है. Social कब होगी? When you actually have that clarity of mind, you actually don't feel fit into your social surroundings and you have a clarity of mind. I don't want to be this person, I want a transition. See, बोलना बहुत easy है, but actually undergoing through that process is really difficult. I don't know how many people you know about the Kardashians, but उसमें से the father of Kim Kardashian is the prominent example I could think of right now, who actually underwent this whole transition thing. He was an athlete. He underwent the surgery. तो वहाँ पे you can see कितना publicly it becomes humiliating and it is a challenging task. It's not easy. So social constraint उसमें पूरा का पूरा आता है. Then there is medical constraint involved to it. Even there, if there is a person who comes from a middle class or a lower middle class family, उनके लिए it's not easy to afford this treatment. So there is a medical constraint to it. ठीक है, चीजों को मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियसली सोच के देखो. सोशली इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्सेप्टेबिलिटी लेके आना, ठीक है. दूसरा टॉपिक है मेडिकली उस चीज को सस्टेन कर पाना. there are many people who actually get pushed into prostitution because of this, because they do not feel comfortable in their body and ultimately they have to find other means to sustain themselves. ठीक है, publicly उनका acceptance नहीं आता है. And ultimately surgeries, ठीक है, medical constraints अलग है and then come surgeries. So these are the topics that are there. Now problem आती है certification की. दूसरा इशू आया सर्टिफिकेशन का. सर्टिफिकेशन का क्या है? एथलीट्स को बोला गया है दे मस्ट सर्टिफाई देयर क्रोमोसोमल सेक्स. क्रोमोसोम का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, XXXY का. सो यहां से आया ऑल एथलीट्स मस्ट सर्टिफाई देयर क्रोमोसोमल सेक्स विद मेंबर फेडरेशन इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ऑल फिना कॉम्पिटिशन. अब कितनी मेंबर फेडरेशंस हैं? इंडिया की अलग फेडरेशन है, यूएस की अलग फेडरेशन है एंड हर फेडरेशन के अपने रूल्स हैं. हाउ डू यू क्रिएट अ पैरिटी कि यूएस के जो रूल्स हैं वो इंडिया के रूल्स से बराबर चलेंगे? सो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर. दूसरा,
Member federations must confirm their certifications from chromosomal sex while registering their athletes to compete in FINA competitions. Suddenly, जो आपका फेडरेशन है पहले आपको क्वालिफाई कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट, ठीक है, हाउ इक्विप्ड यू आर, हाउ गुड यू आर इन द स्पोर्ट्स. आप इंडिया का कंसिडरेशन कर लो. इंडिया इज अ कंट्री where talking about general sex is such a taboo. If you talk about transitions, being a transgender, can you imagine the type of backlash they are going to face and the sort of extreme patriarchy levels that exist in India? How can you expect transgenders to actually come out of the closet and identify themselves as someone they are not? तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ से निकल के आता है. There are certain issues that are there with this whole process. क्या 6 months में आप एक अदर कैटेगरी लेके आ रहे हो, there would be transgenders that would be a part of it, ठीक है. Scientifically there might be many pros but there are many cons to it. सबसे पहला, it is a gross invasion of your privacy. मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ in a particular sports, how is it fair that I have to justify my sex because of it? ठीक है, ये in gross invasion of privacy is one of the chief reasons. इंडिया में ना लोगों को privacy का concept वैसे भी नहीं पता. They do not respect each other's privacy. They do not know the concept of privacy. But in the West particularly, जहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, privacy is something you cannot बर्च अपॉन, ठीक है. निक्सन की पूरी सरकार गिर गई थी यूएस में. इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ इट, हाउ निक्सन एक्चुअली लॉस्ट हिज प्रेसिडेंसी, उसको रिजाइन करना पड़ा था, राइट. सो प्रिवेसी इज समथिंग यू कैन नॉट टिपटो अराउंड इन वेस्ट पर्टिकुलरली. दूसरा, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स. नंबर्स का क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ये कंपीटिंग इन वुमेन्स कैटेगरी, ठीक है. मेल्स कैटेगरी में देयर आर इनफ नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू compete. Women में there are enough number of people in the whole world who are going to compete, but बहुत सारे लोग ऐसे हैं who wouldn't want to come out as a transgender also. क्या is it worth it उतने sources डालना, उतना पेपर वर्क करना, पूरी एक कैटेगरी बनाना for transgenders? Who knows उसमें उतना competition आएगा या नहीं आएगा? Who knows उसमें are there going to be that many people who are going to participate in it? So this is one major point of contention इस पूरे केस में, ठीक है. अगर आप इंटरनेशनल अदर बॉडीज की बात करो तो इन 2021 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड रग्बी इज अ गेम, आई होप नमस्ते लंदन में देखा होगा. नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना, इट्स अ गुड मूवी. So World Rugby became the first international sports governing body to institute ban on transgender women competing in global competitions like Olympics and World Rugby. इन्होंने इसका रीजन क्या दिया था? We cannot guarantee your safety, ठीक है. So that was the reason that was provided by your World Rugby Federation. So they were the first ones जिन्होंने transgender women का ban करा था, and now FINA has come up with the suit. आगे देखते हैं चीज कैसे proceed करती है, but right now it has become a really interesting topic of debate worldwide. Transgender activists ने इसको worldwide oppose करा है. Homophobes have come in the favor of it. Let's see कहाँ पे जाते हैं. But कॉम्पिटिटिव फेयरनेस का जो पूरा कंसेप्ट है निकल के आया, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, माइंड इट. देयर इज अ वेरी गुड चांस ये इस बार के मेंस में आ जाए क्वेश्चन, बिकॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट. सो ये देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है कहानी, ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. आज का लास्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन संकल्प. लेट मी सी अगर कोई क्वेश्चन है. इट्स unfair from their perspective. Okay, Kannu Mahajan is saying it's issue to bring all people on equal ground. See, equal ground की बात नहीं है, बात ये चीज डिसाइड कौन करेगा, because it is something that is inherent in your body. Scientifically उस चीज को प्रूव करोगे, but there are emotions attached to it. Also there is a concept of fairness. 2021 says the most common sex chromosome are external. Okay, these are in fact very common. It's about chromosomal conformations. It's not about the biology of it, right?
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि टेस्टिंग में चीजें कैसे डिफरेंट जा रही हैं एंड हाउ इट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू फॉर्म अ इंटायरली डिफरेंट कैटेगरी. थिंक ओवर इट, थोड़ा सा ट्राई राइटिंग इवन आंसर्स ओवर इट. ठीक है, एथिकल डिलेमा जो इस केस में आती है उसके ऊपर ट्राई राइटिंग एन आंसर एंड ट्राई पोस्टिंग इट इन कमेंट्स. दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू एज वेल. नाउ तीसरे टॉपिक पे आते हैं आज के ऑपरेशन संकल्प के ऊपर. सो ऑपरेशन संकल्प क्यों न्यूज में है? It is the third year of Indian Navy's maritime security operations. Basically, this operation was in regard of Indian vessels that were passing through state of Hormuz. ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज अभी आपको मैप में दिखा दूंगी मैं कहाँ है. आई होप आपने देखा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में. नाउ INS तलवार, INS तलवार is one of the extremely great stealth frigates that we have. ठीक है, लास्ट ईयर इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी इंडिया की तरफ से. दिस वाज द होल सोल पार्टिसिपेटिंग स्टेल्थ. ठीक है, इट वाज डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशन संकल्प एंड कमेमोरेटिंग द थर्ड कॉन्टिन्यूअस ईयर्स ऑफ इंडियन नेवीज प्रेजेंस इन गल्फ. ठीक है, मैं आपको भी मैप में दिखाऊंगी कहाँ पे है. सो दिस इज योर मैप, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. आई होप यू नो व्हाट स्ट्रेट इज. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थुमस. ठीक है, अगर नहीं पता प्लीज क्लियर कर लेना. सो दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. अब 2019 में क्या हुआ था, देयर वर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन वेसल्स का पास होना मुश्किल हो गया था. अभी बताती हूँ क्या है. तो उसकी वजह से वी डिप्लॉयड आर we actually came up with operation संकल्प ताकि इंडियन वेसल्स जो इस प्रॉपर एरिया में, see this is very important, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑयल यहाँ से पास होता है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल यहाँ से पास होता है. सो इंडियन वेसल्स सेफली वहां से निकल आए, उसके लिए वी डिप्लॉयड ऑपरेशन संकल्प एंड इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. सो वी आर कमेमोरेटिंग इट, इसलिए ये न्यूज में था. नाउ रीजंस क्या थे इसके? डिटेरियोरेटिंग मतलब कम होती हुई. ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन इन गल्फ पोस्ट द अटैक्स ऑफ मर्चेंट शिप्स इन जून 2019. ठीक है, तब हमने ऑपरेशन संकल्प निकाला. नाउ सेफ पैसेज के लिए फ्लैग वेसल्स के लिए फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो मैंने आपको मैप में दिखा दिया है, ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली है. नाउ जो ऑपरेशन संकल्प है इसके बेसिक स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज का इसमें हाथ है. दिस इज अ जॉइंट वेंचर. सो दिस कम्स विद योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. देन आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग. ठीक है, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं. सो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये टॉपिक है. Now, Indian Navy continues to monitor the Gulf region and maintaining presence in the region to ensure security of Indian flag merchant vessels transitioning throughout the region. Right? So this was all for your today's class. Are there any? There are other professions which are not open to all genders. Why can't this be one? I don't understand. There are other professions which are not open to all genders. That is the debate. Why your gender has to decide? And again, it is not about gender, it is about sex. ठीक है, Ayush, you'll have to come up with a little bit of broad mind. Why is it that you want to restrain people? ये controlling mentality क्यों है? You'll have to be very open to let people do what they want. If they want to participate in whatever category they want, if they are associating themselves after, see लिया थॉमस का argument इस केस में बड़ा clear है. मैंने ट्रांजिशन करवा लिया है. ठीक है, आई हैव गॉन हार्मोन ट्रीटमेंट्स, जो मेरी गाइडलाइंस थी मैंने वो पूरी करी है. मेरी जेनिटल्स, आई हैव द जेनिटल्स ऑफ अ वुमन. व्हाई एम आई नॉट स्टिल बीइंग प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ अ वुमन जस्ट बिकॉज आई हैव बीट समवन who was supposedly नहीं, who was actually एक्स टोक्यो ओलंपिक विनर. ठीक है, सेकेंड आई थी, उनको मैंने बीट कर दिया. तो ये पूरी डिबेट क्यों निकल के आई है? जस्ट बिकॉज आई हैव थोड़ा सा वो फेमिनिज्म कैन नॉट एक्सक्लूड ट्रांस वुमेन, फेमिनिज्म कैन नॉट एक्सक्लूड ट्रांस वुमेन. आई थिंक यू हैव द होल डिफरेंट कनेंड्रम ऑफ फेमिनिज्म. Trans people, they actually do not associate themselves with feminists. That is the problem. They have their whole different league. Feminism is word में female है. You have to understand.
Feminism ki, I don't know whether you are a sociology student or not, or whether you are a psychology student or not. 2021, if you are a student in institute, I would have liked to have this conversation with you, but never mind. कभी कोई feminism का topic आएगा तो we'll discuss that. Feminism की problem यही है, feminist they do not actually associate, trans people they do not associate themselves with feminist. हम चाहते हैं फेमिनिज्म से, उसको पता है क्यों एसोसिएट किया जाता है? बिकॉज दे आर सीन एज द वीकर सेक्शंस. दैट इज द रीजन ट्रांस पीपल आर बीइंग एसोसिएटेड एज फेमिनिस्ट. ठीक है, आई होप और कोई क्वेश्चंस नहीं है. ट्रांसजेंडर सेपरेट गेम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. ऋषि, यू विल हैव टू वाइडन योर पर्सपेक्टिव. आप ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट गेम्स इंट्रोड्यूस, गेम्स तो वही रहेंगे, गेम्स का स्ट्रक्चर आप ये चाह रहे हो कि जैसे फॉर स्पेशली एबल्ड डिसेबल्ड पैरा ओलंपिक्स होते हैं वैसे एसोसिएट. प्रॉब्लम तो नंबर का है, या ओपन कैटेगरी के केसेस में नंबर की प्रॉब्लम आ रही है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ट्रांस के लिए हम एक पूरा स्पोर्ट्स इन्वेंट कर दें? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इनफीजिबल. प्लीज रीड अपॉन टर्फ्स एंड ट्रांस एक्सक्लूसिव फेमिनिज्म. I have. I think you have something confused. You're confused in a couple of terms, but okay, we'll get to this point when we discuss feminism. This is all for your today's class right now. If you have any doubts, please post them in comments. And there was an article about this in Indian Express. You can read in that. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much.